आज सैटरडे 14 मई 2022 और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 10 मई 2022 को, और जिसमें कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों का केस क्लियर हो गया है। कल हमने डिस्कस किया था डॉक्टर अमरनाथ गुप्ता जी से, जो कि एडवोकेट भी हैं, कि इस केस में कैटेगरी क्या थी, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। आज हमारे साथ डॉक्टर के मधोक इस मीटिंग में हैं, और कल एक डेलीगेशन गया था 5 लोगों का, जिसमें डॉक्टर आई.एम. कपाई थे, प्रोफेसर एस.सी. पांडा थे, डॉक्टर आर.ए. चौधरी थे, और गोपाल उर्रा थे, और डॉक्टर मधोक थे। तो मधोक साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि कल की मीटिंग जो वाइस चांसलर साहब के साथ हुई, उसका कैसा ऑब्जर्वेशन रहा। कल हम प्रोफेसर योगेश सिंह से मिले थे, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और he welcomed us about the possibility of implementing this judgment of the Supreme Court of India. So first of all, we asked them that we have won the case at all stages. We have won the case in the single judge bench, then we have won this in the DB division bench, then the contempt petition that we filed because the university was not implementing that DB judgment, time had passed. So in contempt petition also we won, but the plea of the University Council was that they are not satisfied and they want to file an SLP in the Supreme Court, because as you all are aware, 5 long years, we were very sure from the beginning that our case is very strong. Past experience also, we have 5 long years, waste lot of time in getting justice to the people. But he assured us that the university is not going in for review petition, and he will be talking to the Union of India, he will be talking to the UGC, appeared that to be filed at all. So that gave us some hope that the implementation would start sooner than later. And he told in no unequivocal terms that it will be done within 2-3 months. I told that it will be held on 30th, 3 days difference. 30th of this month? May. Okay. Told us that after this is passed, in fact, he says that this has already been started. And then we told staff, you can depute 2 more people to do the job, and if need be, services can also be availed. And then we came to the question of do's and don'ts. Here also we drew his attention to the letter 2017, para 6, which Gupta ji had already sent to us. And 19th of May 2017. Yes, Dr. Loria had sent that letter on the WhatsApp group, and he read that letter, especially the clause 6. Was told that so there is no problem. That way, thought that now implemented soon. So the meeting with him and the implementation would not be very large. There won't be any inordinate delay in clearing of individual files, and due and drawn approach, as I have told you, on adjusting arrears and return with interest of CPF drawn on superannuation. And he also assured us that there will be expeditious clearance of category 2 files. Besides, we asked about the fate of those who are not the non-litigants. But in the case of category 2, category 1 non-litigants will be given to the colleges or the departments. Only once they know of it, they can implement. But in the case of category 2, they said as people opt for GPF, only then they will be given. They will have to fill an application form. An option form will be given to them. And if they go in for, they still will have a choice whether to go in for Contributory Provident Fund or for the General Provident Fund pension. Because so that then those people will be given option. Yes, sir. Besides, the principals versus finance section officer will also vet our individual files to make efforts in our colleges to complete the formalities both for category 1 and category 2. Departments and the colleges will have to. In fact, I am happy to inform you that yesterday I called my principal and he told me that he has already made the final adjustments. So he is going ahead. I think ours is the first college to have completed. So that's good news. And I request all other principals of colleges and departments to go ahead with the preparation of all the pension deserving candidates get their pensions at the earliest. Thank you मधुक साहब, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि यूनिवर्सिटी लेवल पर किसी तरह का ना तो कोई रिव्यू पिटीशन डाली जा रही है और ना ही किसी तरह की कोई अड़चन होगी। अपने कॉलेज में
मैंने लिख कर दिया हुआ है कि मेरी सर्विसेज कैलकुलेशंस के लिए चाहिए, किसी तरह की भी चाहिए कैलकुलेशंस में, बाकी और चीज़ों में, तो मैं और गुप्ता जी कभी भी कॉलेज को हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ये हमने उनको लिखकर दे दिया है। और कैटेगरी 2 का जैसा आपने बताया कि कैटेगरी 2 में हमें ऑप्शंस मिलेगा, 15 दिन का टाइम मिलेगा। उस 15 दिन के अंदर हम अपना कंसेंट दे देंगे कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो अभी भी सीपीएफ में शायद जाना चाहें। यूनिवर्सिटी या कॉलेज हम उस फॉर्म को भरेंगे, फिर हमारा प्रोसेस होगा। और कैटेगरी 1 में जैसा कल गुप्ता जी ने कहा था, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि 2-3 महीने के अंदर ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और हमारी पेंशन या उसके जो अमाउंट वापस करना है 8% इंटरेस्ट के साथ, और सिंपल इंटरेस्ट होगा, इसमें कोई कंपाउंडिंग नहीं होना, और वो हमें वापस करना होगा। और बहुत अच्छी बात जो आपने बताई कि ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बन जाएगी। उसमें देखा यह गया है कि हमें पैसा लेना ज्यादा है और देना कम है। यदि में मिलना एरियर्स 80 लाख है तो हमें पीएफ का पैसा, सीपीएफ का पैसा विद इंटरेस्ट भी 8% के साथ, सिंपल इंटरेस्ट के साथ, वो अमाउंट 30 लाख है या 35 है। तो ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट का फायदा ये होगा कि हमें पैसा वापस करना नहीं पड़ेगा और हमें नेट अमाउंट मिल जाए। जी अपना ऑब्जर्वेशन और पुरानी जो मीटिंग थी इनकी वीसी साहब के साथ, उसका कुछ खुलासा करें। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले ड्यूटा पेंशन कमेटी को हमने बहुत एक्टिव बनाया था। एंड एट दैट टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ ड्यूटा वाज नंदिता नारायण जी। वीसी साहब ने ज्वाइन किया था 10 मार्च 2016 को, और 23 मार्च 2016 को हमारी उनसे मीटिंग हुई थी, जिसमें मैं, नंदिता जी, लरोया जी और कैटेगरी 2 की सुदर्श ओबराय हमारे साथ। एंड वी हैड ए 90 मिनट्स लॉन्ग मीटिंग एंड वी एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट। जो सुप्रीम कोर्ट ने अब बात कही है 10 मई को, वो सारी बातें हमने वीसी साहब को, योगेश त्यागी जी को 23 मार्च 2016 को बताई थी। एंड ही वाज कन्विंस्ड। हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आप डिवीजन बेंच में भी मत जाइए, 29 तारीख को फाइनल आर्गुमेंट होने थे। हमने कहा जनाब इसको डेट ले लीजिए और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इसको सॉल्व कर लीजिए मामले को, व्हेन यू आर कन्विंस्ड। ही वाज कन्विंस्ड, बट ही पॉइंटेड आउट कि अभी 1 हफ्ते का टाइम रह गया है, लेट द आर्गुमेंट्स टेक प्लेस एंड इमीडिएटली आफ्टर द डिसीजन वी विल फॉलो अप। जब फॉलो अप नहीं हुआ तो 16-26-9 फिर मीटिंग हुई। हमने वीसी साहब को रिक्वेस्ट की आप बैठिए। उन्होंने कहा नहीं, फाइनेंस ऑफिसर जेडवीएस प्रसाद से मिल लीजिए और अपनी बात एक्सप्लेन कर दीजिए, वो डिस्कस कर लें। एंड ही वाज काइंड एनफ टू ऑफर ए गुड कप ऑफ टी, assured us that something would be done shortly, but that shortly never came. And therefore a third meeting was held on 7th of December 2016, जिसमें हमारी तरफ से 6 लोग थे और यूनिवर्सिटी की तरफ से 8 लोग थे। इन 6 लोगों में 3 ईसी मेंबर्स थे, प्रोफेसर त्यागी, प्रोफेसर भागी, आबादेव हबीब, जेएल गुप्ता, और बाकी 3 में मैं, लरोया जी, कमलेश कौर। हमने सारी बातें एक्सप्लेन की और हमें मिसगाइड किया गया। अनफॉर्चुनेटली हमें ये कहा गया कि कोई लेटर लिखा गया है गवर्नमेंट को, एंड इमीडिएटली आफ्टर द रिस्पांस द मैटर वुड बी टेकन अप। हमने कहा लेटर दिखाइए, लेटर नहीं दिखाया गया हमें, और बाद में हमें ये पता लगा लेटर में ये लिखा था कि ये तीनों कैटेगरीज के खिलाफ हम एसएलपी डाल दें, ये लिखा था उन्होंने। एंड दिस वाज a very unfortunate thing that in the 3 meetings that we had with the vice chancellor, with the finance officer, with the other officials including the treasurer and others, we were totally misguided and the government directed them to file SLP against category 2. category 2 के खिलाफ उन्होंने SLP डाली, लेकिन फिर एक लेटर एक जूनियर ऑफिसर की तरफ से आया गवर्नमेंट की, सुबोध कुमार गिलदियाल, और उन्होंने कहा भाई why are you not filing, give us the justification for not filing SLP against category 1. So the proper course of action should have been to write a letter back to the government that it was not necessary in view of the Honorable Supreme Court's well-reasoned judgment of 2006 in Union of India versus SL Verma and others. But that courage could not be mustered by the then VC and the registrar at that time, Mr. T.K. Das, and they went on filing the SLP against category 1 also. And that was very unfortunate development and which placed everybody in trouble. And we fought at the Supreme Court for about 5 years and everybody suffered immense mental agony, harassment, loss and injury because of this problem. Now, my very humble submission at this stage is that whatever university, the mistakes committed by university and UGC also, UGC had absolutely no business to
grant money to university for doing this illegal thing, because university's stand was very clear that 30th of September 1987 was the final day, and I have got various letters with me from UGC that that has to be followed, but later on changed its stance, authorized the university to spend about 10 crores of rupees, which I think is absolutely unreasonable, improper, and wrong by any standard. Now, my suggestion at this stage is whatever is gone now. That, as Madhok Sahab has very clearly pointed out, due and drawn statements must be prepared for both the categories. Every college can prepare it now. One more thing that can be done at this stage, that is, DUTA may be requested to again activate the whole thing, and apart from the committee, the informal committee which is doing its job, let DUTA also pressurize and due and drawn statement, because a large number of persons are not in a position to refund money, physically refund money, colleges or universities, and let a word be very clearly communicated to the principals that no hanky panky now, enough is enough, we have been harassed enough. They knew it very well that category 1 at least was absolutely clear category, and they deliberately delayed the whole thing by towing the lines of the university, filing and in contesting. They totally misconceived, and now, since the decision of Honorable Supreme Court has come, now there is no question of discussing anything. Only follow-up is to take place, and that follow-up must be completed within 2, 3, 4 weeks time. And thank you very much. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और सबसे अच्छी बात यह है, यदि ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट जो बनेगी उसमें मैंने देखा यह है कि पैसा देना कम है और लेना ज़्यादा है। और मेरे पास भी कुछ लोगों ने फ़ोन किए कि हमारे पास जो CPF का पैसा है 30 लाख 40 लाख विद इंटरेस्ट के साथ, वो पैसा हमारे पास नहीं है और हम उसको वापस करने में हमारे को बहुत दिक्कतें आएंगी। तो ये मधोक साहब की जो टीम है 5 लोगों की जो लास्ट कल मिली, यदि दोबारा जब ये मिले तो एक उनको सेशन दे सकते हैं कि बजाय कि लोगों से पहले पैसा लिया जाए फिर वो पूरा का पूरा पैसा जो बनेगा वो दिया जाए, यदि ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बन जाती है तो उसमें डिफरेंस जो है वो एम्प्लॉय को नहीं देना, एम्प्लॉय को पैसा मिलना है और वो मोर देन 50% है। जैसे मैंने कहा 80 लाख के पेंशन के एरियर्स आपको देना 30-35 लाख है तो 45 लाख आपको मिलना ही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मधोक साहब से कि जब सेकंड टाइम मिलें वीसी साहब को या यूनिवर्सिटी की टीम को, तो जुलाई के तक, जून के एंड तक, और डूटा का साथ भी लेना जरूरी। डूटा की हेल्प लेंगे तो काम थोड़ा सा जल्दी और शुरू हो जाएगा। और गुप्ता जी भी जो हैं वो भी 1 जून को इंडिया वापस आ रहे हैं, ये भी अपने थोड़े पहिए इसमें लगाएंगे मधोक साहब के साथ। थैंक यू वेरी मच गुप्ता एंड डॉक्टर मधु। Thank you very much. Thank you. Thank you very much.